Hello everybody, welcome back. Last lecture we studied what is a quadratic equation. Quadratic equation is an equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. The equation has only one variable and the maximum index of the equation is 2. That will be defined as a quadratic equation. Now if there is an equation, there is a solution. If there is an equation, there is a solution. So we are going to learn solving of quadratic equation, and before we proceed to solve, I just introduce you three methods of solving quadratic equation. First method is by factorization. Second method is by completing the squares. You will have some problems here. So when we are going to take this lecture, we are going to take this in detail. And third is by the formula method. This should be very easy for you. This will be tough, this will be semi-tough, this will be very easy for you. So in the following lectures, 3 to 4 lectures, we are going to study. I am going to take about 2 lectures for completing the squares. So about 4 lectures we are going to study how to solve the quadratic equations by factorization method, by completing the squares method, by the formula method. Today's topic is solving the quadratic equation by factorization method. So we start with factorization method. Here is the first sum. थोड़ा बहुत आपने factorization method आपने 9th में किया है, 8th में किया है, ठीक है? What is that? You are going to split this 54 into 2 terms. Multiple of 2 terms जिसका sum 15 आना चाहिए. So what do you think there will be multiple of 54? 2 terms. 9 6 are 54. 9 and 6. But 9 plus 6 is equal to plus 15. So minus 9 minus 6. Minus into minus will give you plus 54. Minus 9 minus 6 will give you plus 54. And minus 9 minus 6 will give you minus 15. So you have here, this will be x square. Here already 3 terms hai. This will be split into 4 terms. X square minus 9x minus 6x plus 54 is equal to 0. अब आपके पास 4 terms हो गए. Make them pair of 2 के pairs बना दो. Take what is common. You have what is common here is x common लिया, ये हो जाएगा x minus 9. X common लिया, x minus 9. What is common here? 6. This will be x minus 9. Minus into minus will be plus 54. Will give you 0. अब आपके पास 2 टर्म हो गए, एक ये टर्म है और ये एक टर्म है. इसमें कॉमन क्या है? x minus 9 and what is left is x minus 6. When there is multiple of 2 terms, when we are multiplying 2 terms and the answer is 0, then either one of them should be 0 or both of them should be 0. Either one of them should be 0 or both of them should be 0. So you have here, therefore x minus 9 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. Change the places.
therefore x is equal to 9 or x is equal to 6. X is equal to 9, x is equal to 6. Therefore 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation. Therefore 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation. We have the fifth sum, 2x square minus 2x plus 1 upon 2 is equal to 0. दिखने में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर एकदम सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे इसको. मल्टीप्लाइंग 2 आउट बाय 2 multiplying through out by 2. This will be 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. पिछला सम हमने किया था उसमें x स्क्वायर का वेरिएबल 1 था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था. यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 4 है. तो रिमेंबर दैट यहाँ पे हमको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है. ओके, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी करना है. ठीक है, कोई भी इक्वेशन में वहां पे a 1 था तो 1 इंटू सी किया था हमने. तो यहाँ पे 4 इंटू 1 विल गिव you 4. We have to split in such a way that we get minus 4. 2 to the 4, but 2 plus 2 will give you plus 4. So minus 2 minus 2 into minus 2 will give you plus 4, and minus 2 minus 3 will give you minus 4. You have 4x square minus 2x plus 1 is equal to 0. दो का पेयर कर देंगे, कॉमन है 2x, then we have 2x, 2 to the 4x square होता है, 2x minus 1, माइनस यहाँ पे कॉमन 1 रहेगा, 2x minus 1 is equal to 0. What we have now, 2x minus 1 is equal to 0. इसको 2x minus 1 the whole square करके भी सॉल्व कर सकते हैं, but we are not doing that according to what method you have to do, because two numbers, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, तो either of them should be 0 or both should be equal to 0. Therefore 2x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. Therefore 2x is equal to 1 or 2x is equal to 1. Therefore x is equal to 1 upon 2 or x is equal to 1 upon 2. Therefore 1 upon 2 is the solution of the given quadratic equation. Okay. This is the eighth sum, 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. Now how to do this? आप बोलोगे 3 multiplied by 2 will give you 6. How to split 6 to get 2 root 6x 2 root 6. ठीक है. Now we are just going to manipulate this subit equation. This is equal to 3x square. This can be written as root 3x the whole square. 3x square can be written as root 3x the whole square minus 2. Root 6 can be written as root 3 into root 2. Root 3 can be written as root 3 into root 6 can be written as root 3 into root 2, and 2 can be written as root 2 the whole square is equal to 0. Root 2 the whole square is equal to 0. ठीक है. तो अभी आपके पास यहाँ पे
this is root 3x square into root 2. Fine. So now this can be this is root 3x square minus as we took this step here the x was missed. Okay, now how to, यहाँ पे 2 root 6 है, यहाँ पे 2 root 6 है, this can be written as, this 6 can be written as root 6 and root 6. Root 6 into root 6 is 6, but root 6 plus root 6 is 2 root 6. वहाँ पे माइनस है तो this can be written as minus root 6 and minus root 6. Minus root 6 and minus root 6. So you get root 6 minus root 6 into minus root 6 is equal to 6, and minus root 6 and minus root 6 is equal to minus 2 root 6. So we expand it. यहाँ तो already single expansion लेंगे हम. Okay, so this will be root 3x the whole square minus 2 minus root 3 into root 2x minus root 3 into root 2x plus root 2 the whole square is equal to 0, plus root 2 the whole square is equal to 0. Try to understand it. Okay, यहाँ पे किस तरह मैंने स्प्लिट किया हूँ and how I have taken here. Just to re-revise it, I'll do this step again for you. यहाँ पे क्या आया, 3 to the 6 आया. 6 can be splitted in root 6 and root 6. Root 6 into root 6 is 6. but एक root 6 और दोनों root 6 ऐड करेंगे तो 2 root 6 होता है, पर यहाँ पे minus 2 root 6 है, तो मैं यहाँ पे minus root 6 और minus root 6 लिख रहा हूँ. Now minus 6 root 6 and minus root 6 gives me 6, and minus 6 minus root 6 gives me minus 2 root 6. तो चलो इसके हिसाब से मैं एक्सपांड कर दूं. This is equal to 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 is equal to 0. अब यहाँ पे कॉमन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पूरा इसको भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सबको प्रॉपरली स्प्लिट कर देता हूँ. This will be root 3x the whole square. This will be minus root 3 root 2x minus root 3 root 2x plus root 2 the whole square is equal to 0, plus root 2 the whole square is equal to 0. Now बहुत चीजें कॉमन हो गई. root 3 कॉमन लग रहा है, root 2 कॉमन लग रहा है. ठीक है. Now there are 4 terms here, उसकी जोड़ी बना लेते हैं. You have what is common here, एक root 3x कॉमन रहेगा. ओके, root 3 और x यहाँ पे, root 3 और x यहाँ पे, root 3x यहाँ पे है, root 3x यहाँ पे है. यहाँ से एक root 3x कॉमन लिया तो एक root 3x बचेगा. And when I have taken root 3x outside, what will be left out is root 2 minus root 2 minus root 2. What is common here? Minus root 2x कॉमन रहेगा, माइनस रूट 2 कॉमन रहेगा. रूट 2 यहाँ पे है, रूट 2 यहाँ पे है, रूट 2 इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट आउट इज रूट 3x एंड माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. एक रूट 2 आपने बाहर लिया तो ये दूसरा रूट 2 बच गया, दूसरा रूट 2 बच गया तो 0 हो गया. चेक इट आउट प्रॉपरली, क्या क्या मैंने कॉमन लिया हूँ. यहाँ पे रूट 3x कॉमन लिया हूँ मैंने, रूट 3x, एक रूट 3x यहाँ पे बच गया. रूट 3x कॉमन लिया तो रूट 2 यहाँ पे बच गया. रूट 2 मैंने कॉमन लिया हूँ तो यहाँ से रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 3x यहाँ पे बच गया. यहाँ से एक रूट 2 बाहर है तो रूट 2 यहाँ पे आ गया. ओके,
नाउ ये दो टर्म हो गया, दोनों टर्म में √3x माइनस √2 और बचा √3x minus √2 is equal to 0. When two terms are equal to 0, then either of the two terms should be equal to 0. Either of the two terms should be equal to 0, or both of them should be equal to 0. Therefore, √3x minus √2 is equal to 0, or √3x minus √2 is equal to 0. Therefore, √3x is equal to √2, or √3x is equal to √2. Therefore, x is equal to √2 upon √3, or x is equal to √2 upon √3. Therefore, the solution of the equation is, this can also be written as, आपके टेक्स्ट में अगर ये भी रहेगा, टेक्स्ट के पीछे अगर ये भी रहेगा तो दिस इज राइट 2/3 and 2/3. Therefore, root of 2/3 and root of 2/3 are the solution of the given quadratic equation. Are the solution of the given quadratic equation. Next is the 10th question. 25m square minus 9 is equal to 0. This can be written as, that is 5m the whole square. 25m square can be written as 5m the whole square minus 3 square is equal to 0. Minus 3 square is equal to 0. Now what is this? It is in the form of a square minus b square. A square minus b square क्या होता है? A plus b, a minus b. Therefore this can be written as, therefore 5m minus 3 and 5m plus 3 is equal to 0. 5m minus 3, 5m plus 3 is equal to 0. ठीक है? Therefore 5m minus 3 is equal to 0, or 5m plus 3 is equal to 0. Therefore 5m is equal to 3, or 5m is equal to minus 3. Therefore m is equal to 3/5, or m is equal to minus 3/5. Therefore 3/5 comma minus 3/5 is the solution of the given quadratic equation. Next sum, this is equal to 7m square is equal to 21m. हम यहाँ पे mm कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन उसका भी है, m का है. So we are not cancelling it. This is 7m square minus 21m is equal to 0. 7m square minus 21m is equal to 0. 7m कॉमन हो जाएगा, m minus 3 is equal to 0. 7m कॉमन हो जाएगा, m minus 3 is equal to 0. यहाँ पे तीन टर्म है, एक 7 है, एक m है और एक m minus 3 है. यहाँ पे तीन टर्म है, 7 है, m है, m minus 3 है. Now 7 cannot be equal to 0. 7 तो 7 है, लिखने की जरूरत नहीं आपको कि 7 is not equal to 0. 7 तो 7 है, therefore 7 बच गया, तो बाकी के दो टर्म क्या बचे? m, therefore m minus 3 is equal to 0 बच गया, because 7 0 नहीं हो सकता है. अब दो टर्म हो गया, therefore m is equal to 0, और m minus 3 is equal to 0. Therefore m is equal to 0, or m is equal to 3. Therefore 0 and 3 are the solution of the given quadratic equation. M is equal to 0 or m is equal to 3 are the solution of the given quadratic equation. Next in line are two sums from the problem set 2. Question number 7
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एंड थर्ड. ओके, सो व्हाट इज हियर? मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाय 10. जब डिनोमिनेटर रहता है तो आप पूरा डिनोमिनेटर को उड़ा दो. मल्टीप्लाइंग throughout by 10. You have 10 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा. This will be multiplied by 10. This will be multiplied by 10. This will be multiplied by 10. This will be 10x square minus 30x minus 30x. 10 10 कैंसिल हो जा रहा है उधर. ओके, ये 10 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, तो ये 10 10 कैंसिल हो जा रहा है. ओके, वहां पे 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 10 और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं हम. 10 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट माइनस 10. माइनस 10 को स्प्लिट करना है प्रॉपरली टू गेट माइनस 3. 5 टू द 10 होता है. 5 टू द 10 होता है. वेयर डू आई कीप नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन माइनस 3 है, तो माइनस 5 एंड प्लस 2 विल गिव मी द रिक्वायर्ड steps for solution. Minus 5 into plus 2 is minus 10 and minus 5 plus 2 is equal to minus 3. तो इसको एक्सपांड करते हैं. 10x square minus 5x plus 2x minus 1 is equal to 0. What is common in this 2? 5x. 5x common. 2x बच जाएगा. 5 2s are 10x square. 5 2s are 10x square. माइनस 1, यहाँ से 5x लिया तो माइनस 1 बचेगा. ओके, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन रहेगा. दिस विल बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दो टर्म हो गया, इसमें कॉमन 2x माइनस 1 है. 2x माइनस 1 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x minus 1 5x plus 1 is equal to 0. Therefore 2x minus 1 is equal to 0 or 5x plus 1 is equal to 0. Therefore 2x is equal to 1 or 5x is equal to minus 1. Therefore x is equal to 1 upon 2 or x is equal to minus 1 upon 5. Minus 1 upon 5. Therefore 1 upon 2 and minus 1 upon 5 are the solution of the given quadratic equation. Coming to the last question of the day and last question of the exercise, particularly factorization, almost पूरा cover कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. This को इसको expand करो आप. a plus b the whole square के हिसाब से आप expand करो. a square plus 2ab plus b square. a square plus 2ab plus b square. You have 4x square plus 12x plus 9 is equal to 25. 4x square plus 12x plus 9 is equal to 25. You expand it, you will get 4x square plus 12x plus 9 is equal to 25. This will be 4x square plus 12x plus 9 minus 25 is equal to 0. 4x square plus 12x plus 9 minus 25 is equal to 0. This is 4x square plus 12x will give you minus 16 is equal to 0. Minus 16 is equal to 0. Dividing throughout by 2. पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं. पूरा इक्वेशन 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 कॉमन है. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. Dividing throughout by 4.
dividing through out by 4, you have x square plus 3x minus 4 is equal to 0. X square plus 3x minus 4 is equal to 0. You have here minus 4 है, माइनस 4 को प्लस 3 के हिसाब से एक्सपांड करना है. एक्स स्क्वायर 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 नहीं होगा, 4 1 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 4 x minus 1 is equal to 0. Therefore x plus 4 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to 4 or x is equal to minus 4 or x is equal to minus 1. Therefore minus 4 minus 1 x is equal to 1. Very sorry, थोड़ा confusion हो रहा है. x is equal to minus 4 or x is equal to 1. Therefore minus 4 and 1 are the solution of the given quadratic equation. आपके प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 7 में बाकी के प्रॉब्लम जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होंगे. सो डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम, वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर. दूसरे जो मेथड्स है फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा उसको. सो डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट. हाँ, आपका मैंने प्रैक्टिस सेट 2.2 किया हूँ. ट्राई टू डू जो भी मैंने सम छोड़ा हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2 के, ट्राई टू कंप्लीट दैट. थैंक यू वेरी मच.